बैक टू माय चैनल. दिस इज द नेक्स्ट डे. तो कल हम गए थे मिनी सिटी टूर के लिए एंड उसके बाद वी विजिटेड दुबई मॉल. वी witnessed the fountain show. No camera in the world can describe the beauty I witnessed yesterday. And उसके बाद हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे, जस्ट होटल पे आके जस्ट क्रैश हो गए. एंड नाउ इट इज़ अ डे 3 एंड आज हम लोग जाने वाले हैं डॉल्फिन शो देखने के लिए. एंड देन वी आर विजिटिंग बॉलीवुड थीम पार्क. ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं एक्साइटिंग, बट इट्स अ वेरी चिल डे एंड वी आर डूइंग वेरी good touristy thing. I say, oh, there is a one suggestion. इतने दिनों में what I learn is that यहाँ के लोग ना बहुत ही ज़्यादा sweet and welcoming है, but everything has pro and cons as well. So whenever you're coming Dubai and you are walking into street and कभी भी लोग आपको सामने आके बोलते हैं like iPhone चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, like कोई भी डिजाइनर ब्रांड्स की सेकंड कॉपी और फर्स्ट कॉपी प्लीज उनसे मत लेना. दे आर द स्कैम. ज़्यादा कुछ करते नहीं है. इफ यू से नो तो वो चले जाते हैं, आपको फॉलो करते हैं या फिर कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हैं नहीं, बिकॉज दुबई इज अ क्राइम फ्री सिटी. यहाँ का फूड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड आपको बहुत सारी जगहों पे इंडियन ऑथेंटिक फूड भी मिलेगा इफ यू वांट टू ट्राई आउट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एंड ऑल ऑफ स्टफ लाइक दैट. एंड दिस इज द आउटफिट फॉर माई थर्ड डे. आई एम wearing this baggy crop top and with my black denim, and I'm going to carry my white sneakers with that.
o'clock in the afternoon और हम just अभी lunch करके hotel वापस आए. And before that we were to attend dolphin show. Please visit if you are coming with kids, but if you are coming with friends or an adult group and आपको अगर ये skip करना है तो definitely skip कर सकते हैं. But अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो please उनको यहाँ पे लेके जाइए, उनको definitely बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. Now in an hour we are going to Bollywood theme park. मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है and I'm really excited. And if I'm not wrong, Bollywood theme park is 60 kilometer far from Dubai, basically where we are staying. So we are here at River Island, Dubai, and we are going to visit the Bollywood Park Dubai. Classes, मुझे धूप लग रही है and I found a Costa coffee. To be honest, मुझे coffee की बहुत ज़्यादा craving हो रही है. But I have heard that Bollywood Park के अंदर ना कुछ भी खाने पीने का allowed नहीं है. So I am a bit confused that should I buy a coffee or not. Cafe, but we have a show here, so I don't know when I can get my coffee. It's a very happening place. If you have a group, then you should definitely visit this place. The place is really very happening. The vibe is just fabulous. प्यारा म्यूजिक बज रहा है, that too Bollywood, but you cannot listen because अगर आप लोग सुनोगे ना तो मुझे कॉपीराइट आ जाएगा. If you want to meet Ritik and Shahrukh. Guys, we missed our first show, but that's okay. So in the next show. Guys, I just met a really very sweet person who is working over here. He's from India, Hyderabad, and it's very nice to meet our people in other countries. Little bit hurry because मुझे किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना. Just a
अभी थोड़ी देर पहले आई एक्सपीरियंस लगान लाइव. मतलब क्या राइड थी. इट वॉज अ 3D राइड बट द एक्सपीरियंस इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. मतलब इतना अच्छा. इफ यू आर कमिंग टू दुबई डेफिनेटली विजिट द दुबई. If you are coming to Dubai definitely visit Bollywood Park and all the rides are amazing. The 3D rides are just out of the world. You will feel like it's real. In just 9 minutes you will feel the entire movie and it's priceless. मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफकोर्स यहाँ वहाँ पे अलाउड नहीं था. इनफैक्ट मेरे क्लासेस फोन सब कुछ ले लिया था. Like this. Yes. Like this. What like? We are not going. ऊपर के बिना नहीं चला सकते. नहीं, इसका मजा ही ऊपर जाने में. The next ride is this one, जो पूरा ऐसे round करके ऊपर जाते हैं. But I'm not going. Experience another Bollywood movie which is शोले और गब्बर को मार के क्या मजा आया. ऐसा लग रहा है मैं ही शोले में थी. And guys, I won. I got score of 53,000. I was so excited. This ride, the park is really amazing. मेरा गला पूरा बैठ चुका है because 3D राइड में पूरे शोर मचा रहे हैं. It's just worth the money. So amazing. तो ठीक है बट फिलहाल मुझे भूख लगी. मैंने लंच के बाद कुछ भी नहीं खाया. कॉफ़ी तो पता नहीं पिया. आई एम एक्चुअली क्राइविंग फॉर कॉफ़ी बट इट्स टू लेट फॉर द कॉफ़ी और मुझे बहुत गंदी वाली भूख लगी है ना. बट मेरा भाई मुझे जबरदस्ती लेके जा रहा है. अगर मुझे कुछ हुआ ना आई गेस मैंने आज के दिन का बहुत ज़्यादा बैठ चुकी राइड में. बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है बिकॉज इंडिया में इट्स 8:30 और ये मेरा वक्त होता है डिनर करने का. while watching तारक मेहता का उल्टे चश्मा and I'm actually starving. I don't know आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो कि नहीं बिकॉज आसपास म्यूजिक बज रहा है. मुझे शायद नहीं मुझे ये म्यूजिक कट ऑफ करना पड़ेगा वरना मुझे कॉपीराइट आएगा. पार्क बहुत बड़ा है. एक दिन में कवर करना इज इम्पॉसिबल. फाइनली पेट में कुछ आने वाला है. When you have foodie brother, you can never do it. दुबई में आके we are eating पानी पूरी. I guess पार्क बंद होने का टाइम हो चुका है because I'm seeing security around me. Guys, I'm logging on my phone because मेरे कैमरा की बैटरी डेड हो चुकी है. दोनों बैटरी डेड है. We are going to have fun.
With this beautiful view, let's end this vlog. That's it about this. If you enjoyed this, then don't forget to do all the good things, like, comment, share, and subscribe. With this, I'm signing off. We'll meet you in my next video. Till then, bye, club.